Hey, hello everyone. My name is Sumit Madi, and today we are going to talk about the biotechnology and principle. This topic is very, very close to me. Like I really love this topic, so I will try to give you as much as knowledge that I can pour on your mind and just enjoy it. Okay, so let's concentrate and focus, and let's start the first topic, that is the biotechnology and its principle. So let's begin with this. So these are the topics. So as we move ahead, what is a biotechnology? The first question that arises in the student's mind. So, what is biotechnology? As we talk about the bio, that means study with the life, or biology, that we know that study with the life. Bio, that related to the life, that is the organisms, we can say. Technology, that means something has to related with the life, and technology should be there. Like organisms are used in the technology, or technology used in organisms, something kind of thing connection is happen. Yes, so let's study about in detail. So you can see a beautiful pictures over here, like DNA structure is there, somebody is doing research on the plant leaf, somebody is doing something, the scientist is doing something on the something like related to genes, like we are talking about the living organisms over here. Okay, so we are talking about what a living organisms over here. So let's talk about detail what is exactly the biotechnology. So it must have a definition. What is the definition? Biotechnology is a technique of using live organisms or their enzyme for a product and the process useful to human being. So can I say this is an alteration we can bring? For example, like in that leaf, suppose I have changed some gene. That is, what is the gene particle over here? The DNA. If I interfere into the DNA, something I will get the product which is definitely new from that origin, right? So earlier it was something else, now it's something else because we are interfering into what? A DNA, that is genetic material. So that's why they put a definition to what? A biotechnology is the technique of using live organisms. Underline that word. We are using with, or we are dealing with a live organisms or their enzyme. For example, in we study about the antibiotic. What is antibiotic? We are getting enzyme from the different species of organisms, or we can say microbe that kills the pathogen inside the body. So we are taking the enzyme from them, right? So what is that? We're talking about the enzymes for the products and the process useful in. So all we are doing is for human welfare. So can I say the what is the motto or what is the principle of biotechnology? To create some products which are related to the human beings. For example, suppose we are lacking in insulin earlier days because it is derived from the horse, pancreas or the pig. Okay, but right now the demand is so much. Demand इतनी बढ़ गई कि हमें ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स चाहिए था जिससे हम लोग इंसुलिन और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे. So यहाँ पे यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी. We will see later on step by step how it is useful. Okay, so let's begin with this. So, according to the European Federation of the Biotechnology, they tells us that the European Federation, that is EFP, defines the biotechnology as the integration of the natural science. What is integration? Something is there and you integrate it. It means what? You have an original plant, you're creating something and you get a desired product which is much more higher rate, or much more production rate is much more as compared to the original. So you done with the integration in what? Natural science and organism. Suppose I want the insulin from the E. coli. E. coli was a bacteria which is we are using as a host cell. We're studying it later on, but I'm just going to give you the interaction examples. Okay, so when we talk about the organisms over here, that means we are provoking the organisms to prepare to synthesize insulin for us. So that is a natural integration of natural science and the organism cells, part of the thereof, and the molecular analogs for the products and the services. Why there is a word molecular analog? Because we are, suppose I want the insulin from the E. coli. So E. coli is not responsible, or their genetic material, उसका genetic material बना ही नहीं कि वो इंसुलिन बने. तो हमें उसके डीएनए में इंटरफेयर करके जो डिजायर जीन है, जो क्या है इंसुलिन बनाने वाला जीन, जो ह्यूमन बॉडी से निकाल के वहां पे डालना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर एनालॉग बना रहे हैं. So what is the biotechnology? Is overall technique in which there is an integration of the natural science and organisms, cells, part, they find the molecular analogs for the products and services. What are products and services? It is used for the human welfare. Okay, so let's move further. आगे बढ़ते हैं. So what is the biotechnology? It deals with the microbe, that is a mediated process. What is the microbe here? Microbe mediated process. That means you are working on a microbe and you want a desired product from the microbes. Why? Because their reproduction or multiplication rate is much higher, and we can incorporate, or we can say incorporate the desired gene or desired genome fragments into that bacterial cell, और वो बहुत rapidly grow होने के कारण
हमें वो प्रोडक्ट भी फटाफट मिलेगा. सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस. दैट इज मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड द वाइन. वी कैन टॉक अबाउट हाउ कैन यू मेक द कर्ड. दही कैसे आप जमाते हो, कैसे जमाते हो. फॉर एग्जांपल आप मिल्क का वेसल लोगे, एक दही का चम्मच ला वहां पे डाल दोगे और थोड़ी देर के रख दोगे. आफ्टर सम आवर्स यू ऑब्जर्व दैट the milk become the viscous. That means curd जमना चालू हो गया, यहाँ पे दही जमना चालू हो. तो what is the curd में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस टेसई. करेक्ट. सो लैक्टोबैसिलस क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दे चेंज द लैक्टोज, दे यूटिलाइज एंड मेक द लैक्टिक एसिड. इसलिए स्वीट टेस्ट फर्स्ट होता है, उसके बाद कौन सा होता है, एसिड. दैट इज फॉर सार टेस्ट बिकम. यस और नो, ये होता है कि नहीं होता है. यस. सो दैट इज अ माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस. हम लोग उसको सेकंड क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इन केस ऑफ सपोज we know that for the zygote formation we need a male gamete and a female gamete. Male gamete is a sperm, female gamete is what, the ovum. Suppose some of the reason like genetic reasons should be there, stressful reasons are there, some problems are there, so because of that the ovum is not formed, sorry, the zygote is not able to form. So what we have done, in vitro, outside the body, we take a sperm, we take a ovum, we fertilize it. Like what happens, the combination occurs, that is the fertilization process occurs, and then we again stick adhere to the uterus over there. So here what we are doing, in vitro fertilization is there, and that's why it's called outside it we are doing, right? That's so in vitro, and that is also known as the test tube baby program. Now next one, that is a synthesis and a using of a gene. We are like, suppose I want to prepare an insulin, for example. So I take a desired gene, incorporate into the host cell, whatever E. coli or whatever the organism is responsible or beneficial for me, I incorporate it into that, and मुझे अपना product मिल जाएगा. Then preparation of the DNA vaccine, that is also more important. What is vaccine? Vaccine is a half attenuated dead microbes. You can say it has to be incorporated into the body or it has to give into the body. Then what is going to happen? The body prepares the first mechanism. For example, अभी कोरोना का सीजन चल रहा है. I am talking about the कोरोना सीजन है. दैट मींस क्या, कोरोना डेडली वायरस है. बिकॉज क्या हो रहा है, हमें वैक्सीन अभी तक मिली नहीं है, मिली है लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, उसको स्प्रेड करना, आई मीन देना, क्या देने का प्रोग्राम चालू, राइट. तो वैक्सीन का मतलब क्या है, हमने क्या किया, कोरोना वायरस को ही ले लिया, उसके हाफ अटेन्यूटेड बना दिया. मतलब जो भी पार्टिकल्स है उसके, जो पॉइजनस है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस है, जो बॉडी में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली तो नहीं दे सकते बॉडी को, राइट. सो वी हैव टू रिमूव सम टॉक्सिन्स एंड वी हैव टू गिव द आइडेंटिफिकेशन दैट बॉडी को, कि अगर ऐसा वायरस आगे जाके आया तो आपको क्या करना है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है. तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. बिकॉज वी आर बॉडीज ऑलरेडी नो सम काइंड ऑफ वायरस इज वेरी हार्मफुल टू अस. ऑलरेडी बॉडी क्या कर रही है, अपनी mechanism, immune mechanism boost करके रखते हैं. That's called vaccine. What is the motive behind the vaccine? To prepare the immune system response very fast and quickly. Okay, now correcting the defective gene. That is a corrected defect. Suppose a person is or individual is suffering from the cancer. तो कैंसर से निकालने के लिए भी और लाइक उसके नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी उसको क्या करते हैं, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करते हैं. डिफेक्टिव जीन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल आरबीसी एंड सिकल सेल आरबीसी कैन बी देयर. सो व्हाट इज सिकल सेल इज व्हाट, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ तो वैलेंस से कुछ चेंज होता है, वैलेंस इज अ न्यूक्लियोटाइड ओवर देयर. तो अगर वो चेंज हो रहा है, प्रोटीन चेंज हो रहा है, तो वहां का शेप भी चेंज हो रहा है, तो उसको भी डिफेक्टिव है वो अभी, तो उसको क्या करना है, हमें चेंज करना. तो दिस आर द थिंग्स कम अंडर द biotechnology. Can I say biotechnology deals with the alteration mechanism over here? Yes. So this is all working on the what, human welfare. So this is the image that we have just studied. You can say that tomato is there, and somebody is giving the injection to it. Why? Maybe for the ripening, maybe for the disease resistance. That kind of thing is there. Okay. So this is how. See, you can say test tube baby, but baby is not going to produce in the test tube like this. Only the fertilization takes place. The whole baby grow in the uterus. Okay, don't misunderstood that image. That image is give only the identification of what happened in the test. Now let's study about the principle of biotechnology. Here, this is the most important part that I'm going to talk about. The core technique of modern biotechnology is depends on the principle of the biotechnology. What is the first? It is a genetic engineering. The word itself states that a genetic engineering means what? We are doing something, we are changing something, we are making alteration, part change कर रहे हैं genetics के साथ. That is why it's called a genetic engineering. So what is that exactly? The technique in which genetic materials such as DNA, that is deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid, is a chemically altered. When you talk about the alteration, that means exactly you're doing the changes, okay, and introduce into the host organism to change the phenotype. आप उसका appearance ही change करोगे. There is a word phenotype is written. So what is genetic engineering? The technique in which genetic material, that is DNA and RNA, is chemically altered. That is the most important thing in genetic engineering. हम लोग क्या कर रहे हैं?
इस आरएनए और डीएनए को क्या करे, ऑल्टर करे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंसुलिन चाहिए ई कोलाई से, तो ई कोलाई का जो डीएनए है उससे मैं क्या करूंगा, थोड़े से चेंजेस कराऊंगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. So when you talk about the bioprocess engineering, what comes in your mind? It's a maintenance of the sterile ambience in a chemical engineering process for the growing desired microbes, eukaryotic cell in the large quantities for the manufacture of the antibiotics and the vaccine and enzyme. So this is also important. See, with the help of genetic engineer, we are doing the bioprocess engineering. Means what? Suppose I want to prepare a vaccine. So I have to take the pathogen, I have to study on that, and whatever the required material, whatever required to give the identification of that particular organisms to the body, you have to take it out from. Okay, so that is a ambience. So we have to maintain the sterile ambience. You can't just give that microorganisms to the like you can healthy person, right? That healthy person can be suffer a lot because of that. So you need to work on that. You need to provide a sterile ambience where there is no pathogenic environment is there. So once you consume it, once you get into the bloodstream that particular organisms particles, then your body should be provoked that some immune response, right? So this is how we are talking about in a bioprocess engineering. So do you know what is genetic engineering and bioprocess engineering? So these are the two principles of the biotechnology. Okay, so let's move further. I guess आपको पता चला होगा यहाँ पे. So यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, genetic genes के साथ, and what is the DNA? The genetic material where information is stored. So a lot of information stored in the DNA. So this is how. I want to give the one example. Suppose you know मच्छर, right? मच्छर से हमें बहुत दिमाग खाते हैं, हमारा डायलॉग भी है, लेकिन हम ये डायलॉग बोल नहीं सकते हम लोग. Okay, so पहले कछुआ छाप आता था, राइट, लाइक मच्छरों को भगाने के. देन मॉर्टिन यूज हो रहा है, बट अभी इतने मच्छर शैतान हो गए. शैतान हो गए मतलब क्या, उन्होंने अपनी बॉडी में ही चेंज कर दिया कि ये स्मेल और ये परफ्यूम लाइक स्मेल, इससे हमें बचना है. तो दे हैव क्रिएटेड देयर बॉडी सो रिस्पॉन्सिव कि अभी उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पैक्स लेके मार डालते हैं, राइट, उनको. सो इसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते, बट वी आर डायरेक्टली किलिंग देम. बट सपोज एक ही चीज बार बार क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, बार बार यूटिलाइज हो रहा है, तो उनके बॉडी में भी क्या होगा, response, immune response का भी start होगा. तो same that working the same mechanism. Now I am going to talk about the one example here, antibiotic. When you visit a doctor, डॉक्टर आपको चेक करता है और एक पर्टिकुलर मेडिसिन से, दैट इज कॉल्ड, सपोज कोल्ड एंड फ्लू के लिए मोस्टली एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, मोस्टली एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, लाइक एमॉक्सिसिलिन है, क्लाविनिक एसिड है, कभी कभी कॉम्बिनेशन. बट वही एंटीबायोटिक आप बार बार यूज करोगे, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, your body is getting again and again getting exposure towards that antibiotic, and the pathogens which residing in your stomach, in your body, they are going to be used to with that. So अगर उनको they familiar हो गए उनके साथ, तो नेक्स्ट टाइम उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक की दवाई चेंज करनी पड़ेगी. तो हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करें डॉक्टर के पास जाके, कि जो 3 डेज का डोज होता है, वी हैव टू टेक इट कंटिन्यूअसली. अगर आपको 2 दिन लेने के बाद या फिर किसी किसी को एक डोज देने के बाद अच्छा लगता है तो वो छोड़ देते, नहीं, वी हैव टू कंटिन्यू इट. एंड देन इफ देयर इज नो चेंज, देन यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर. सो कुछ चीजें हमें सोचनी चाहिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट the basic steps in a generic modifying organism. So what are the basic steps should be there, right? See, we talk about the alteration. ये इसका जीन उठा के इसमें डालना चाहिए. But is it easy? No, because we are dealing with a cell, which is a unit cell, function unit cell of the organism. So we are dealing with a cell. If there is something problem, that cell is not going to work, right? So we are deliberately working on the cell, और बहुत आसानी से नहीं होगा ये चीज. So उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, right? So first we have to need the identification of DNA with the desired gene. What we want to create. Suppose I want to create insulin, I want to synthesize insulin. So मुझे insulin का gene कहाँ से मिलेगा, human से. For example, I want to make a plant or crops like drought resistance. So मुझे जंगल की वैरायटी पहले ढूंढनी पड़ेगी, उसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, कि ज्यादा पानी मिले तो कैसे रह रहा है, कम पानी मिले तो कैसे रह रहा है. तो वो जो मॉडिफिकेशन है उसका है, वो कौन से जीन से रिस्पॉन्सिबल है, उसे उठा के मुझे अपने फील्ड क्रॉप में लेके आना. तो दिस आर द स्टडी. सो व्हाट यू वांट फर्स्ट, what you want, that is the question. That is called identification of DNA with a desirable gene. That is the most important thing that we are talking about here, that is identification. Okay, once you know what you want, then now we have to do what? Once you get what you want, you have to just remove that desired gene and you have to put it. It's very easy to say that यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना नहीं भाई, बहुत बहुत स्टेप्स है इसके अंदर. हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बहुत इजी लगेगा. But those actual scientists who have done the MS in biotechnology or they're doing a PhD over there, they know how it's difficult to just extract it. Okay. Now introduction of the identified DNA into the host. What is the host cell?
I just told you like example of E. coli, right? So E. coli bears, or like we are introduced that desires into E. coli for synthesis of insulin. So किसमें क्या किसके अंदर डाल रहे हैं? E. coli के सेल के अंदर डाल रहे हैं. तो E. coli का सेल क्या हो गया आपका? Host cell. Correct. Let's move further. Now third, once you just insert into और हो गया आपका काम? नहीं. We need to maintenance of the introduced DNA in the host cell and transfer of the DNA to that progeny. तो हमें उसको क्या करना? उसका जैसे ही रिप्रोडक्शन होगा तो हमें देखना है रिटेंशन कैपेसिटी कितना है. वॉट एवर वी हैव मेड द चेंज, हर ऑर्गेनिज्म को कैरी फॉरवर्ड करेगा या नहीं करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो वी हैव टू मेंटेन इन अ पर्टिकुलर like area environment. Okay, so that is the important thing in biotechnology. So these are the basic three steps we have to understand. Now the first step we are talk about the basic steps in genetically modified organisms, the identification of DNA with the desired gene. So what is that? See, we have studied here the three steps. Now we are talking about each and every step detail में बात करें. Okay, so don't get confused. Just be with me. So now we're talking about the first thing. That is identification of DNA with desired gene. So we have to identify what we want. That is most important. And here the traditional hybridization techniques lead to the inclusion and the multiplication of a desired gene and desired genes. Okay, undesirable genes and desirable genes we are going to talk about. So traditionally hybridization, how we are changing, that is traditionally hybridization technique lead to the inclusion. Inclusion is what? हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है. हमें फर्स्ट वो देखना है कि डिजायर जीन हम लोग निकाल रहे हैं वो एप्लीकेबल है या नहीं है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. वो सर्वाइव होगा ई कोलाई के अंदर डालने या कोई भी एक्सवाइजेड बैक्टीरिया के अंदर डालने तो सर्वाइव होगा या नहीं. दैट इज द थिंग. So in genetic engineering, only desirable genes are introduced. We can't put undesirable genes. Why? Because we don't want it. Like we, for example, मैं crop कर रहा हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, ठीक है, चावल की खेती है, वहां पे गेहूं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई ऐसा प्लांट आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए. Why should I waste my nutrients NPK towards that? क्यों? तो उसको निकाल के फेंक दूंगा ना. तो मुझे डिजायर क्या है? इंसुलिन. तो मुझे इंसुलिन ही चाहिए. तो मेरा डिजायर जीन क्या है? इंसुलिन वाला. तो आई हैव टू स्पेसिफिकली कट ओपन इनटू दैट ओनली द फ्रैगमेंट्स. आई कैन टेक एक्स्ट्रा. जो चाहिए वही लोगे ना. तो अनडिजायरेबल नहीं चाहिए आपको. क्या चाहिए? डिजायरेबल ही चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट, second, that we have studied introduction of the identified DNA into the host. How can you incorporate into? How can you like introduce that into that? So this is how to study now. So a vector DNA. What we require? A vector DNA. What is a vector? For example, suppose I want to go from my home to my college. For example, so I will take an auto. So what is an auto over here? Or I will go by bike. So bike is a vector. So vector is what? A media that is transferred. A vector DNA, such as a plasmid, what we required, a plasmid is used to deliver an alien piece. We are not talking about alien. Alien is what? For E. coli, the alien piece is what? The DNA, that is insulin fragment, gene fragment is there. That is the alien for that. Okay. So into the host organ. So what we required a vector DNA such as a plasmid over here. Okay. So this is the second step we are talking about in detail. Okay. So see here, there is a bacteria. Bacterial DNA is suppose this is E. coli. So there is a bacterial DNA cell and plasmid cell. You can say bacterial DNA is very complicated one. It has a S shape kind of. But when you talk about the plasmid, it's like circular one. So आपने डिजायर जीन लिया, प्लास्टिक की थैली में डाला और वहां पे ट्रांसमिट किया. प्लास्टिक की थैली यहाँ पे क्या हो गया आपका? प्लाज्मिड. फॉर एग्जांपल जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लेमन लाइक. ओके, डोंट कंसीडर इज अ proper is a plastic theli. Okay, it's what it's a circular DNA where you can introduce a desired gene and you just incorporate it into the host cell. So this is the thing. So see here, recombinant DNA. Once you see what is this, look at here. You take a plasmid out. Now in the plasmid you have put what? Desired gene. Now that desired gene and plasmid is called recombinant plasmid because plasmid you have to interchange it, right? You have to change. आपने कुछ उसमें change किया तो अभी क्या हो गया? Recombinant मतलब combination recombinant. Okay, so अभी recombinant plasmid आप E. coli का जो host cell है उसके अंदर फिर से डाल रहे हो. तो अभी देखो यहाँ पे पहले कैसा था? ये बैक्टीरियल डीएनए था, प्लाज्मिड था. अभी प्लाज्मिड आपने निकाल दिया है, प्लाज्मिड के साथ ऑल्टरेशन करके आपने डिजायर जीन प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया तो वो बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. अभी वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहाँ पे डाल रहे हो? फिर से वही सेल में डाल रहे हो. दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म सेल. सो हियर यू आर प्रोड्यूस द ट्रांसफॉर्म सेल. ओके, यू गॉट दैट पॉइंट. सो लेट्स मूव फर्दर. Now let's talk same the basic steps in genetically modified system. That is the third. How to maintain. Now once you introduce into that.
आपने डाल दिया, अभी उसको मेंटेन कैसे करोगे, दैट इज अ क्वेश्चन. ओके, so let's study about how to maintain, and there is a one word DNA in the host cell you just introduce and transfer to DNA to its progeny. What do you mean by progeny? Reproduction cycle. Once you change, once you once you alter, definitely has to be multiplication. हमने एक में छेड़छाड़ किया, right? वो उसको रिप्रोडक्शन करके मल्टीपल कॉपीज से. Why we have select the bacteria? Because bacteria का रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, तो हमें जो प्रोडक्शन चाहिए वो बहुत फास्ट मिलेगा, इसलिए तो प्रोडक्शन तो होना चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन तो होना चाहिए. तो प्रोजेनी तक हमने जो चेंजेस किए वो रिटेंशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दैट वी हैव टू लुक आफ्टर. So a piece of alien DNA has no sequence called origin of replication. What is the origin of replication? You know what? This nahi na dance nahi kar raha hai. I'm showing you something that is a DNA. You can see over here, right? DNA structure is there. Now one DNA is like this. Okay, spiral banding like this thing is there. So what is the origin of replication? जहां से वो divide होके two separate बनेगा. The point where they separate and form the another DNA. That point is called origin of the replication. That is ori. Okay, needed for the starting of replication. Replication होने के लिए क्या चाहिए हमें? Ori. That is origin of the replication. Needed for the starting replication. So it cannot be multiply itself in the progeny cell of the organ. तो हमें उसकी टेक केयर करनी चाहिए. We should look after कि वो मल्टीप्लाई खुद से ही ना हो. क्या चाहिए? We need to provide the progeny cell of the organism. So ये पॉइंट आपको पता चल रहा है कि we have to maintain that conditions where नाउ हमने क्या किया, प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट कहाँ डाल दिया, होस्ट सेल के अंदर. अभी होस्ट सेल के अंदर हमने डीएनए के साथ नहीं छेड़ करके प्लाज्मिड के साथ डाला है, तो भी जैसे रेप्लिकेशन हो प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होगा, तो जो डिजायर जीन है वो भी आना चाहिए ना. तो उसके वजह से ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. वी नीड दैट टू replication. Okay, got it. So let's move further. So hence the alien DNA is integrated into the recipient genome. It has a ori. So हमें क्या करना है, ओरा है जो चाहिए ना, because क्यों चाहिए, रेप्लिकेशन तो होना चाहिए. सिर्फ डाल के हो गया नहीं, इसको रेप्लिकेट भी करना है, उसको प्रोपैगेशन भी करना है, राइट. सो हेंस द एलियन डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट जीनोम व्हिच हैज अ ओरा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया. नाउ इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिटेंस अलोंग विद द होस्ट डीएनए. जैसे होस्ट डीएनए चेंजेस होगा वैसे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. इनहेरिटेंस मतलब कि उसके अंदर ही रहेगा और चीजें चेंज होती जाएगी. So these are the three steps that we have studied over here. Okay, now principle of biotechnology, the process of a joining and inserting of a foreign piece of a DNA into the host organism to produce a new genetic recombination is called a recombinant DNA. What we are doing, हमने जो origin E coli था उसका अस्तित्व ही मिटा दिया. कैसे मिटा दिया? Because he is live, that cell is live. But what going to happen? हमने उसमें ऐसे changes कर दिए कि वो अभी कुछ नया product synthesize कर. So we have make him what? To produce a new genetic combination. न्यू combination कर दिया और उसको क्या बोलते हैं, recombinant. Because combine करके कुछ चीजें combine करके कुछ चीजें alter करके हमने उसको ऐसा बना दिया कि अभी वो desired product हमें synthesize करके दे देगा without interfering his own life. Getting my point? So that is called recombinant DNA technology. So first recombinant DNA, that is rDNA, produced by the Stanley Cohen and the Herbert Boyer in 1972. So you have to remember this point. They isolated an antibiotic resistant gene. उन्होंने क्या किया, एक antibiotic resistance. What is antibiotic resistance? Suppose I'm eating penicillin again and again to kill the pathogen which is inside the body, but once it got resistant to it because it's no ये इससे मैं मर रहा हूँ, तो इसके बाद जीन इसने क्या किया, खुद को मॉडिफाई किया. तो antibiotic resistant gene, that is a piece of DNA from a plasmid of Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium में से उन्होंने क्या किया, antibiotic resistant gene को निकाल. It was linked with a plasmid vector and transmitted to E. coli. अभी उन्होंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस जीन निकाला, किसमें से, साल्मोनेला से निकाला. वो साल्मोनेला वाला जो रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जो जीन था वो डीएनए का फ्रैगमेंट था या डीएनए पीस ऑफ डीएनए हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसको उठा के किसमें डाला, ई कोलाई में. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, एज अ रिजल्ट द जीन वाज एक्सप्रेस एंड मल्टीप्लाइड इन ई कोलाई. किसका था, साल्मोनेला टाइफी का. उसने रेजिस्टेंट बिकॉज़ ई साल्मोनेला इज व्हाट come under the pathogenic bacteria. And E. coli is what somewhat talking about the good bacteria which is there in the digestion. Okay, proper digestion के लिए E. coli हमें चाहिए. इसे देखो मार्केट में योपल का प्रोडक्ट आता है, उसमें लिखा है ना E. coli कसई या फिर okay lactobacillus कसई along with E. coli वहाँ पे रहता है. Okay, these are the good bacteria. Now Salmonella typhimurium का जो भी क्या था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था उसको निकाल के E. coli में डाला उन्होंने, और उन्हें क्या पाया कि जीन वो E. coli में भी क्या हो रहा है, express हो रहा है. So from there they got the idea of recombinant DNA technology. Okay, that's great. See here,
they have a Salmonella typhimurium over there. Okay, so उन्होंने उसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निकाला, ई कोलाई में डाला, अभी ई कोलाई भी उनके जैसा काम कर रहा है, बिकॉज वो भी क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया वहां. Okay, so got it. So today we have talked about all the three steps required for the biotechnology. Then who started the biotechnology or who invented biotechnology? We also talk about that. So I hope you understood all the things. If you want, I should continue in the next lecture. Please do comment. It will be very happy because I'm doing interaction in the one way. I just want two-way interaction. That students में हमसे बात करें, उनको क्या चाहिए, उनको क्या difficulty है. It will be better to understand, right? So it will be helpful for me to give a lecture. Okay, so thank you for the paying attention, and I hope I will meet you soon in the next lecture.